Okay, Naman, just introduce yourself. Good afternoon, sir. Thank you for giving me this opportunity. I am Naman Kumawat from Pink City, Jaipur. I am recently qualified cost accountant, securing an All India rank 12 and the title of Rajasthan topper. Along with this, I have completed my graduation from the University of Rajasthan, and I have completed my practical training from CMA firm Ratan Sharma and Associates. Along with this, I also have worked in Big Four consulting firms, KPMG, in a member firm of KPMG, BSR Ampersand Co LLP, and there I received an appreciation award from all of the partner and director group. That's all about this. Okay. In your interest, you have mentioned politics. Yes. What do you mean by interest in politics? My interest in politics is, for me, it's like to deal with all these political debates and like these all. That means you will be including yourself in office politics. Well, this seems a little difficult for us to even think about your name then. Reason, you are clearly mentioning that you will be part of office politics. You can be the reason for problems created in the office then. Like interest in politics doesn't seem that it is a bad interest. It may portray the leadership attributes also. You want to say that all political people are good leaders then in that case? But not all politicians are bad too. Like our prime minister is a good leader. Well, that is decided, but this is quite subjective. And like also. But you want to be a part of office politics. You want to accept that. I don't want to be part of office politics. For politics, my ideal is like of Chanakya Pandit. Like I want to serve to the society and to the organization. So, how politics can help to serve the society or our organization? Sir, with leadership traits and like convincing all the employees and all the peer group. You've come with an idea that you want to be a leader only, not a team member. I'll work as a team member, but will try to become a leader too, if the situation warrants. As we have seen, politicians do lots of false promises as well. So, can we think that you are influenced by the politics or whatever you are saying that are false promises or the That I sentences? mentioned that my role model for politics is Chanakya Pandit. Okay. And a story for that him is like a Chinese ambassador came to meet him, and he met with him, and at that time there was a process of light lamping, so he off his lamp and turned on another lamp, and the Chinese ambassador thought this is a part of their greetings and all, but after he's curious and he asks to Chanakya that why do you did this? So he replied that I am using nation's property for nation's work only. So this is my personal work, so I'm using my lamp only. Okay, it is written in Chanakya Niti that Chanakya has destroyed all of its competitors. He did lots of things. He came up with the concept of Vishkanyas and all the things. He destroyed each and every states over there. But So also there is a collaborative things also. yeah, just listen to me first. So, what do you think that type of strategies and you are influenced by the Chanakya Pandit? So, you can use such strategies in our organization as well, so that you can grow in compared to your competitors and you can try to destroy their career as well. Sir, I am inspired with the collaborative things like to unite all the Janpads and all to defend whole country from the Alexanders and like all. So, don't you think you should go into the politics part then? Because that is not possible through our company.
you are inspired from the Alexanders and all, you want to make one country and all. That is possible through the politician part only, prime minister, president. You should go over there then. So that's the idea, that what I was just said is about the idea that I was inspired of. But this doesn't mean that I am interested in like all these national debates and all. I would like to be in a, I don't want to make a political career right now. I didn't decided about that. But in future you may decide about that and you can leave our company. So currently I have not thought about this part. So I can't say about this. And you are saying that you want to united and you want to follow that part only, collaborative part. So you are not Sir, inspired. collaborative, competitive, all type of trades. So you are That not is, fully inspired from the Chanakya, sir, I am, because there was some concept like destroying the competitors as well. sir, I agree, but I'm inspired from Chanakya's all the positive traits and So anything. there were some negativities in Chanakya as well. There was some like using of Vishkanyas as a weapon. So no one is perfect in this world. Okay. So I am So trying to adapt only positive points and the points that are suitable for me. so not only Chanakya, you can adopt from whole world then. There should not be single personality then. Yes, sir. Sir, also like our former president APJ Abdul Kalam, sir. He has also served for the nation and for the his organization ISRO. So current president is also serving. Yeah. So what do you think? They are not that much capable so that you cannot adapt anything from them? So, but role model was already decided. Like Okay. and Kalam sir was from not good background, and he started ISRO and Okay. Naman, tell me about 5 things about yourself that make an asset for any organization that hired you. sir, I'm a keen learner and keen observer, for which my academics already proved that, and also I am born with a gift of gap, and I have a team building skills, for which I have received appreciation award from the partner director group of KPMG that I was mentioned earlier. And I'm confident, but sometimes get nervous. And I guess I have strong convincing powers and leadership qualities. Okay. Naman, what is repo rate and reverse repo rate? So repo rate, the name itself suggests that repurchase option, and it is a rate governed by RBI to repurchase the securities from the banks. Securities or money? Money. And reverse repo rate? The reverse repo rate is the just opposite of repo rate, and it is the rate at which banks get lend money from RBI. Okay. Naman, just tell me about something that treatment of sale of scrap. Treatment of sale of scrap. Sir, the sale of scrap may have two treatments depending upon the nature of the material. If it is a raw material, in the costing we shall deduct it from the raw material consumed part, and if it is of finished goods, we shall reduce it from the cost of production. Okay, so what about variable cost and variable overheads? So variable cost may be direct or indirect, but variable overheads are always indirect costs, and variable overhead are part of variable cost, but not vice versa. Why the material ill variance arises? Material ill variances is arises. So material variance arises due to the difference in the ratio of standard mix and actual mix. Are you sure? I guess.
Okay, just brief about your articleship experience with KPMG. In KPMG, I've been assisted in a team for the stock count of Tata Motors Limited, and there I've concluded the stock count in 2 to 3 hours with a team of 5 members at a plant in Pune, Chinchwad. Along with that, I have also handled a whole LLP, singly handedly a whole LLP of a Willow manufacturing firm, Willow Safe Water LLP, and also conducted their group audits and statutory audit for that. It is a world fifth largest pump manufacturing company, and also some aluminium manufacturing company like Sapa and IT company like LLP of Slack Inc. in India. Okay. So you are also pursuing CS as well. Yes, sir. So you were pursuing CS, then now CMA. Why you left CS, or what are the drawbacks of doing CS? So CS I'm currently pursuing, and in this June itself I'll clear it. So you will take leaves for the exams then? No, sir. Then how will you go for the exams? Sir, for exam I will take only 3 to 4 hour break, just like half day leave. Okay. So you will be doing CS as well. Then after completing CS, you will get 2 degrees and you will leave our organization. No, sir. Sir, it will add value to our organization. How? So, like with completing CS degree, I may have exposure to the secretarial department as well. Secretarial departments like? Secretarial department, like I can oversee the compliances part also in our that I may go for overseeing the internal controls of the organization. So according to you, we should not hire company secretaries for that position. So for that position, a practicing company secretary is already required, as it is a requirement of the Companies Act also. And being a member of institute, I can't hold 2 positions at the same time. So don't you think you don't get satisfied with one thing and you are pursuing simultaneously 2 courses? So you don't have that much belief on the CMA course that you can get I good have job. belief in CMA course, but the curriculum of CS course was, as I've already mentioned, I'm a keen learner. It inspired me to adapt something new, so I went for that course. Keen learner or easily distracted? Well, putting this aside, after getting offer letter from us, the very next day, you are selected in our competitor's company with a good package. What will you do? I'll reject the competitor's package. That means you do not want money. You don't work for money. Yes, sir. So whatever salary we give you here, you'll be working with us. But it should be satisfaction. It should give satisfaction to me also. Okay. So in that case, you are not expecting promotions from our company in that case, because you are satisfied with the work. I mean, if I'll performing well, I'll be satisfied for promotion too. So if you think that you are quite capable enough, why don't you accept the offer of the other company who's giving you a higher salary package, because they consider you as more capable? Due to my ethical principles like integrity, and like I've been selected here, I can't waste a seat for other student too. Okay. And I've applied here, that means I'm not applying anywhere else if I had selected here. Okay, Naman. You have also done the CSR related works and all as well. So what is the provision of CSR in Companies Act? Sir, as per the provisions of Companies Act, there is section 135 of the Act which states that every company which crosses the threshold needs to maintain the CSR committee, which will oversee the CSR expenditure, and at least 2% of average of preceding 3 years net profit should be spent as a CSR. And also a CSR committee should be formed involving at least 3 independent directors. Right. Okay. Naman, as you mentioned, you also get a certificate from the labor courts. Just tell me about labor court 2019 related to the wages.
So Labor Code 2019 relating to wages specifies about various things relating to our employees, employee wages. So currently I can't get a grip on that. Okay. And you also got a certificate regarding activity-based costing. Yes. So what is the difference between activity-based costing and ABC analysis? So activity-based costing is basically a new method different from traditional costing. Like in traditional costing, we do apportionment of overheads through machine hour rate, etc. And in activity-based costing, we do apportionment of our overheads through cost drivers. We take a cost pool and divide it on the basis of cost drivers. And ABC analysis is something we are grading like priority wise, like A category, B category, and C category. Naman, explain the work related to aging of debtor and creditor. So aging of debtor and creditor is generally the classification of the debtors and creditors in different day slots like 0 to 90 days, 90 to 180, 180 and more. And as per the legal requirements, now we need, as per Schedule 3, we need to mention it along with the disclosures so that we can analyze them and can write off the debtors back and can make the provisions, suitable provision for that. So, what type of strategies we can follow to better recovery or better debtor managements in our company? So for that, we can improve our data cycle periods and we can offer cash discount to the customer so that they get convinced to pay cash immediately. And like also to the daters, like they'll given the option, if they pay in 15 days they will get 1% discount or 0.5% discount. Okay. Naman, if we hire you, then what type of profile you want to work with us in our company? So the profile that was mentioned, Accounting part, taxation part, finance part, legal part, audit part, finance part. finance part. Okay. Then explain the difference between NPV and IRR. So NPV is the situation where the cash inflows exceeds the cash outflows, and positive NPV is always viable to the company, and the project should be selected if a NPV is positive. And IRR is the internal rate of return at which our NPV is always zero. So it is no profit, no loss. So why we used IRR rate in which terms? So we use IRR rates to determine the appropriate or actual cost of capital that a project may lead to us. Okay. Uh, Naman, explain uh, 5 types of turnover ratios. So 5 types of turnover ratios. Any five type of So I need to explain them or to name them. name them. So inventory turnover ratio, data turnover ratio, creditor turnover ratio, fixed asset turnover ratio, raw material turnover ratio. Okay. So inventory turnover ratio is more better and less better. So I didn't get your question. Inventory turnover ratio more better or less better? If ज़्यादा का turnover ratio आएगा वो better है कम better है? So more is better. Okay. Naman, what are the blocked credits under GST? So as per the GST Act Section 17, subsection 5, block credits refers to the part of credits that we can't utilize for ITC purpose and we can't get credit on them, like a motor vehicle with a seating capacity of less than 13, like any product we have purchased for personal consumption or which is damaged.
Okay. Only these are the There are block various credit. lists. Name 5. So like laying of pipelines outside the factory, motor vehicle with sitting capacity of less than 13, including driver, aircrafts and air vehicles not used for business purpose, general insurance business relating to the motor vehicle, aircraft and air insurance business, food and catering services, and the goods stolen or destroyed, goods used for personal use. Okay. Are you a staunch believer? Are you a staunch believer? Staunch belief. Believer of religion? Are you a staunch believer of religion? Are you a religious person? Let's simplify the language. Are you a religious person? I believe in God, and I am also believe I have faith in my religion and respect all the religions. Okay. Okay, thank you, Naman. चलिए आपसे What do you mean by self-motivated? कान में चाबी लगा करके चलने लग जाते हो? Personally driven. These words don't exist in English language. They don't exist. Okay, ये हटा देना. Right? Confident. That's enough. Personally driven, self-motivated. ये YouTube वाली लाइन है ना, निकाल के फेंक दो. ठीक है? Definitely not acceptable. Able to manage time effectively. ये क्या लाइन है? Good at time management. ठीक है? ये तो मेरे 20 प्रिंट कर लिए इसके। 20 रुपए तो लगे, 40 रुपए लगे। वो बता वैसे भी ब्लैक एंड व्हाइट वैसे नहीं लेके जाना ना। कलर लेके जाना है। मॉक के विदाउट क्यों प्रिंट कर? हाँ मॉक में तो पता चलना था चेंज। एग्जैक्टली। मुझे लगा चेंज नहीं करना होगा। ओह माय गॉड, कितना कॉन्फिडेंस। बाकी सबको भी बस होता है। पैकेज से फर्क पड़ जाएगा, इससे पैकेज से फर्क पड़ जाएगा। नहीं कराऊंगा चेंज ये क्या लाइन है? सेल्फ मोटिवेटेड एंड पर्सनली ड्रिवन। मैं टाइम पे बनाया था थोड़ा। नहीं, गुड एट टाइम मैनेजमेंट, कॉन्फिडेंट, दैट्स इट। ओके, एंड दैट इसमें कीन लर्नर। बाकी ये पॉलिटिक्स हटा दो, ये हटा दो वर्ड। दिस डजंट एग्जिस्ट इन एमएनसीज। मे बी इंडियन एमएनसीज में शायद फिर भी एक्सेप्टेबल होगा, बट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट वर्ल्ड वाइड दे डोंट एक्सेप्ट। और यहाँ पे स्पिरिचुअल ऐड कर सकते हैं क्या? नो वी आर टॉकिंग अबाउट वर्ल्ड लेवल, ग्लोबल लेवल, वर्किंग लाइफस्टाइल। वो बोला पूजा करता रहेगा यहाँ की। स्पिरिचुअल की दंगे करा देंगे तो मेरे ऑफिस में। यस, हिंदू जय श्री मुस्लिम राम को पता बड़ा दूसरा हाल है। सर्टिफिकेट के नाम लिख रखे हैं। लेबर कोड्स 2019 related to the wages. It is for social justice for labor. So अगर अपन ने यहाँ मेंशन सारी चीजें कर रखी है तो हमें नहीं पता सारी में मेंशन कौन सी कर रखी है। तो वही चीज सबसे बड़ी चीज आज आपको करना क्या है, ये पूरा सीवी लेके इसमें से 100 से ऊपर क्वेश्चन रेडी करना। इस सीवी में से 100 से ऊपर नहीं, उससे भी ज्यादा हो सकते हैं। इतना बड़ा आपकी जो आपके सर्टिफिकेट कोर्सेज है ना, हर सर्टिफिकेट कोर्सेज में 3 से 4 क्वेश्चन जिसके बारे में पता नहीं उसको हटाओ। हां, स्क्रूटनाइज कर दो। लेबर कोड्स मुझे पता है आपने सीएस में पढ़ा है, तो उनकी डिटेल भी वहां पड़ी है, पर नॉलेज उसकी भी होनी चाहिए। टाइम हो गया ना उसको। टाइम हो गया तो यहाँ पे टाइम हो गया तो स्क्रूटनाइज कर दो ना फिलहाल के लिए। ओके, थैंक यू। एंड आई कांटेक्ट, यू वर मिसिंग आई कांटेक्ट, राइट? बार-बार ऊपर देख रहे थे। Need to look into the eyes of the person you are talking to and face everyone, right? If I am asking you the question, that doesn't mean you look at me only. हेयर स्टाइल भी थोड़ी थोड़ा रियल ये राउडी वाला है। थोड़ा सा वो हेलमेट के जो थोड़े खराब हो गए। एक बाल दूसरे में फंस रहा है। नहीं, कंघी लेकर ना क्या वापस हो गया था, ना के वापस हो गया था। मैं इसका बहुत बड़ा इफेक्ट है आपकी फेस का। गेस्चर्स अच्छे हैं, आई कांटेक्ट की थोड़ी सी कमी है, उसको इंप्रूव करो। बाकी नॉलेज वाइज तो कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं आपकी। सिर्फ पर्सनालिटी पे थोड़ा सा पर्सनालिटी थोड़ा सा बॉडी डोंट लैंग्वेज। गेट कैरीड अवे, डोंट गेट कैरीड अवे। कोई क्वेश्चन आपसे पर्सनल जब पूछते हैं ना, डोंट गेट कैरीड अवे, इट्स ओके। जैसे सर ने वो चाणक्य नीति के लिए बोला, यू गॉट रियली पर्सनल अबाउट इट,
कि ऐसे कैसे, डोंट गेट कैरिड अवे। सर ने भी तो प्रोफेशनल तरीके से पूछा तो सर क्या मतलब है, तुम अपनी लाइफ में रियल लाइफ खुद ही जाके फॉलो करो। मैम इसीलिए तो उसमें बोला ना कि आपको टोटली यहाँ नॉट पर आंसर इंस्पायर्ड। ऐसे देने जो प्रोफेशनली अच्छे प्रोफेशनली लगे। अच्छे लगे, बात खत्म। हाँ नहीं तो पॉलिटिक्स वाला तो हटा ही देंगे ना। हाँ हटा दो, बिल्कुल हटा दो। Why do you want to indulge into a topic that और ये कोई नेता अच्छा है बुरा है ये भी नहीं बोल सकते। exactly वो Politics कहीं होगी। हेटर हुए मोदी के तो हाँ तो फिर क्या करोगे? बोले इसको तो नहीं ले। हाँ, पता पड़ा वो वसुद्दीन की फैमिली से आया है, फिर क्या करोगे? असदुद्दीन। Whatever, I don't want to know his name even. तो पता है कि ज्यादा चल रहा है कि हमें किसमें जाना है? IRED है। तो IOCL की तो शॉर्ट लिस्टिंग आ गई। नहीं है उसमें। आ गया ना उसमें, मतलब मेल आ गया, शॉर्ट लिस्टिंग PDF तो नहीं है, और उसका पैकेज नहीं पता अभी तक। कोई बात 18 लाख होता है और भी बेनिफिट्स काफी सस्ता लोन मिलता है 2% पे। पेट्रोल पे भी देते होंगे कार्ड बना के। पेट्रोल पे तो ज्यादा नहीं बट लोन ही 2% पे मिल रहा है। हाँ। कहाँ मिल सबसे उसको जाके उस पे हाँ हाँ, वही वही, वैसे ही। 5% पूरी जिंदगी वैसे ही खाते रहो, ब्याज ही खाते रहो बाकी दिन तो। रहने को घर मिल जाता रहने है। को घर मिल जाता है, perks ही दामाद हो perks है। जाओगे तुम बस। और पर्क्स ही पर्क्स है उसमें, तो फिर ट्रैवलिंग में भी काफी हाँ। मिलता है उनको। LTC वगैरह। हाँ, फॉरेन ट्रेवल भी देते हैं क्या? नहीं फॉरेन का नहीं, इंडियन ट्रैवलिंग में LTC आता कहीं पे भी जाओ। तुम तो जाओगे भी अयोध्या। नहीं नहीं तिरुपति। मुझे अयोध्या की ट्रिप करवा दो। तिरुपति अयोध्या पास में रहेगा ना। है। अयोध्या तो यमुना एक्सप्रेस से ही चले जाएगा। पास में रहेगा ना अयोध्या, साउथ में जाऊंगा तिरुपति। बोल मत देना पापा। वर्क ऑन योर फेशियल गेस्चर्स। और ये थोड़ा क्या है? makeup भी थोड़ा कर trim- लेते हैं। हाँ, तूने इसको ट्रिम तो करा, ये कैसे शैपी लुक ले रखा है, ट्रिम कराओ। आज इसके लिए था, वापस आना पड़ा जो थोड़ा से। हाँ जाओ जाओ फटाफट जाओ, जाके फटाफट कराओ। से। ये करो। और ये वाइट शॉक्स के लिए आराम ये ब्लैक वाइट हाँ, पे हाँ। यार मैं ये एक मैं ही पूरा क्या? बॉडी लैंग्वेज यूं ही ये बैठेगा, जैसे वो अंदर चेक है ना, करेगा हाँ, body जैसे अंदर है ना वाइट सॉक्स पहने, और उससे मैं इतना डॉट आया इस लड़के को मैंने। हाउ डेयर यू वेयर वाइट सॉक्स? जो थोड़ा से डायरेक्ट है ना, तो वहां से वाइट उससे सॉक्स। language। शॉक्स जो छोटवाड़ा से आने का इसका क्या मतलब? तो आधा सामान तो वहीं रह गया, वापस लेने जाना Shampoo पड़ेगा। your hair before you enter the place where you're going. Shampoo your hair. Trim चाहे your ट्रायल beard. लगा लेना थोड़ा Trim your हेयर beard. स्टाइल थोड़ी ठीक। और स्माइल के साथ में, लड़ाई वाली स्माइल नहीं, तो फतेह करने आना है। स्माइल, प्लेजेंट स्माइल। और ये 4-5 लाख के पैकेज से फर्क पड़ जाएगा। हाँ हाँ। 4-5 ज्यादा ही लेके जाऊंगा। 4-5 ज्यादा नहीं, लेके और जाना है, वो- उसके लिए वो- improvement उसके करना लिए- वो जो बोल रहे हो वो मत करना वहाँ पे। और मीणा जी कैसे हो? वो ऑलरेडी नो। का फर्क पड़ेगा। बोले वहाँ नेम प्लेट लगी होगी क्या, तो मैं पूछ लूंगा और मीणा जी नमन मैं कॉल कह रहा करवा हूँ, दूंगा। 4-5 लाख के पैकेज का फर्क पड़ेगा। कितना इम्प्रूवमेंट है। इम्प्रूवमेंट है। आगे जैसे 18 का CTC हो, मैं बढ़वा दूँ। हाँ ये तो मैं ये हो सोच सकता है, fact- मैं ये सोच रहा हूँ कि Exactly. 20+ तो चाहिए, क्योंकि वो बोलेंगे हायर, तो मैं पूछूंगा इस CTC रिवाइज तो वही समझो इस बात को। बढ़ जाएगा क्या सर See, CTC? everything is CTC बढ़ सब जाएगा। तो फिर 4-5 लाख का सारी कंपनी डिफरेंस। अपने लॉस चेंज करेगी ना। कंपनी बोल देगी ऐसे खूब बैठ जयराम बच्चन गोली लेकर के खड़ी होगी ना शाहरुख खान की एंट्री में, CTC चेंज करेंगे हम तुम्हारे लिए, तो आओ तो सही। जो आज तक रूल बुक पड़ी थी टेक्निकल कंपनी में चेंज बहुत कर अच्छा है, लेकिन काफी कंपनीज क्या लेकर के चलती है, बॉडी हमें लैंग्वेज। पर्सनालिटी भी थोड़ा चाहिए, हमें वो बॉडी थोड़ा लैंग्वेज भी हायर कर रहे चाहिए। हैं वो। आप ये सोच कर चल रहे हो कि भाई गवर्नमेंट कंपनी सेमी गवर्नमेंट मिलेगी तो वहां पे इन चीजों की पॉलिटिक्स में आप मान लो कल को सारे एम्प्लॉइज को इकट्ठा करके कंपनी के अगेंस्ट कर दो, विद्रो स्ट्राइक पे ले जाओ, हम नहीं करेंगे तो काम। सर गलत होगा तो करना ही पड़ेगा। बस यही ये भी कंपनी बंद करवा के रहेगा उसकी। नहीं तो वो मुंह पे थोड़ी बोलूंगा यार, वो पहले दिन वहाँ पे स्पीच दी थी, ये थोड़ी बोला था बंद कराऊंगा बच्चे कंपनी को। मेरे पे साइन होगा तो आपका जो डिस्ट्रीब्यूट अभी जो आपका थिंकिंग लेवल है ना, वो कंपनी वाले जज कर लेंगे। हाँ, थोड़ा मैच्योरली आपको पता लग जाएगा। बिहेव कर। तो सोच समझ के आंसर देते सर हो, बैठे ही इसलिए। प्रोफेशनलिज्म बाहर में जाएगा। HR आपके सामने सिचुएशंस ऐसी ऐसी देंगे जिसमें आप पकड़े ही जाओगे। अभी जैसे आप पकड़े गए पॉलिटिक्स में, कितना ही बोल लो। कितना पहले चाणक्य को Involve अच्छा हो बताया, गया। फिर बोला मैं सिर्फ अच्छी चीजें ही लेता हूँ उसकी। पूरा इन्वॉल्व हो गया, पूरी तरह से engrossed हो गया। So get control on your personal तो थोड़ा feelings. डिप्लोमेटिक तो बोलना ही पड़ेगा ना, क्योंकि फिर बाद में ये हो जाए कि चाणक्य ने गलत भी नहीं किया तो था, तो फिर आप आप- एक्सपेक्ट कैसे हो रहे हो? आप जाओ मत ना उस रास्ते। हाँ नहीं तो पॉलिटिक्स हटाऊंगा। हटा दो। वो किसी का नेम तो लेना ही नहीं, बोले बहुत सारे जितने सब्जेक्टिव जो है। अच्छी अच्छी हाँ, और चीजें। सब्जेक्टिव है, हर एक का पर्सनल ओपिनियन है। पूछ भी सकते हैं कि ये पॉलिटिक्स लिखा है तो कौन सा पॉलिटिकल लीडर है, सब्जेक्टिव। चाहिए इसको मेंशन
सीएस अगर ना भी करे ना मेंशन करे तो चलेगा। ज्यादा मैंने better यही है। लाइन बोली थी तुम्हें, याद है? लेकिन सर एक एक यही मैंने बोला बोला था दूसरी डिग्री बताओ मत। रैंक 2 है जयपुर के अंदर, एक जगह रहना यार फिर रैंक 2 मैटर नहीं सी करती। हैं ये सीएस हटा दो बेटर। हाँ, फिलहाल के लिए हटा दो। हटाई दो, अपने क्या फर्क पड़ रहा है, वैसे ही सीएमए में भी रैंक है हाँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दूसरा सबसे बड़ी बात, जून में जब हो जाए ना, तो योर सिलेक्शन इज ऑलरेडी डन, देन यू कैन मेंशन दैट दिस इज एन वो मैंने अभी एक फॉर्म फिल दिस इज किया अ था, वो फेदर टू माय देखा। कैप, दिस इज अनदर फेदर टू माय कैप, तब बता दो। अभी के लिए अवॉइड एनीथिंग दैट इज क्वेश्चनेबल, अवॉइड। तुम्हारा वैसे ही सीएमए का इतना अच्छा रिजल्ट है और बाकी का अच्छी प्रिपरेशन है, उसकी आर्टिकलशिप्स और नीड है ना, यू डोंट रिक्वायर एनीथिंग एल्स। इसने सब मिक्स कर रखा है, आर्टिकलशिप बता रखी सीए की, अच्छा, सीएमए के नाम पे डिग्री दिखा रखी सीएमए की। ओ तेरी। ये सीए आर्टिकल है जो वर्क एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, और ये सीएमए तो आर्टिकल सुनो, अब क्या चेंज करना है आपको, बाकी सारी